नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस डब्बे खोलने वाले चैनल में। तो आज हम खोलने वाले ये फ्लिपकार्ट का डब्बा। तो चलिए डब्बे खोलते हैं। तो दोस्तों हमारे पास आ चुका है ये डब्बा और इस डब्बे की करेंगे हम अनबॉक्सिंग। तो यहाँ पे लाइए मैंने एक नाइफ जो कि मैंने इंपोर्ट की है, पता नहीं कहाँ से, शायद मुंबई से इंपोर्ट की है मैंने। और ये हमने खोल दिया है, इसका सील यहाँ भी खोलना है, पता नहीं, बट खोल तो देते हैं हम। इसको खोलते कैसे हैं? यहाँ से ऐसे। ओह माय गॉड, फोकस। बढ़िया, ये है हमारे पास बढ़िया सा फोन Redmi Note 4। ये अलग तरह से खुलता है। ओ ये बढ़िया है। और कैसे मिल गया? ये बढ़िया है यार, ये तो कुछ अलग है। सो वी हैव MI का, और यहाँ पे सील टूट चुका है। ओ माय गॉड। यहाँ पे है हमारा फोन, इसको खोलते हैं। ओ ये गोल्ड सुनहरे कलर का, इसके ऊपर बहुत पैसा है हमारे पास, सुनहरे कलर का। फोन को बाजू में रखते हैं क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें तो इसमें देखना है, हमें तो डब्बा देखना है। ये है कुछ वारंटी गाइड जो हम इंडियंस कभी नहीं पढ़ते, तो साइड में फेंक देते हैं। हमारे पास ये है चार्जर, जिसका वोल्ट मैं बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा, डिस्क्रिप्शन देख लो क्योंकि उसमें पढ़ना आता है। ये है हमारे पास चार्जिंग केबल, और केबल को रखते हैं फेंक देते बाजू में। ये है पिन जो हर जगह घुस जाती है। और ये देखो डब्बा, देखो डब्बा खुल गया। चलो हम इसे अभी बंद करके बाजू में फेंक देते हैं। तो हमारा फोन बूट हो चुका है और इस बूट की बूटी पे, तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो पहले इसका ऊपर का निकाल देते हैं। ओ हो, आनंद मिल गया, आनंद मिल गया। चलो ये भी निकाल दिया। पीछे है वार्निंग का साइन, जो हम वार्निंग इंडियंस कभी सीरियसली नहीं लेते, हम तो इसे देख भी नहीं, मैं तो देख भी नहीं रहा इसके ऊपर क्या लिखा है। और हम इसे निकाल के फेंक देंगे। कुछ लोग इसे लगा के रखते हैं, मुझे नहीं पता क्यों लगाते हैं। देखते हैं फ़ोन, अभी इसके ऊपर क्लिक करते हैं। ब्राइटनेस तो बढ़ नहीं रही। चलो इंग्लिश इंडिया करते हैं क्योंकि हमें अंग्रेज़ी आती नहीं दूसरों देशों की, हमें तो यही चाहिए। ये क्या है? हम क्विकली सेटअप करते हैं इंडिया। So folks, I've bought this Xiaomi Redmi Note 4 for 11,000. The variant is 4GB and the 16GB, 4GB RAM and the 16GB internal storage. Well, it has the hybrid SIM slot, so I don't think that would be much handy for much of the users. For example, for me, I need two SIM cards and also a memory slot, so that won't be handy for me. I need a separate device for that also, so that's not for me. Well, it has runs on the MIUI 8, which is also good. It has 1080 into 1920 screen resolution, at least better than Oppo and Vivo phones. Well, let's not talk about them. Well, it has Qualcomm Snapdragon 625 clocked at 2 GHz CPU. Well, that's a good CPU and it has very good reputation and good in the market one. Well, you get Adreno 506 GPU, although you can't do Bitcoin mining through it. Many of them asked me that can we do Bitcoin mining from mobile? I mean, like, यहाँ मेरे GTX 1050 Ti OC Edition 4GB वाले से माइनिंग नहीं होती, तुम्हारे फोन से क्या होगी यार? Let's leave it. Well, the phone looks good, but the main thing that I need to tell you guys is, if you have the budget, I'm telling you as a reviewer, as an elder brother, whatever you tell it, if you have the budget, if you can go up to 2K or 3K more, then you should go for the MI A1. Definitely you should go for MI A1, or you should go for Honor 7X, or maybe if it depends on where you're at, what time you're watching this video, maybe tomorrow or after 10 months or 10 years later. Well, today in 2018, this device has a very good competition in the market, but if you have the budget, you can go for that device. Just spend 2K, keep my words, just spend 2K and go for MI A1 or Honor 7X or Moto G5 S Plus. These three devices
don't go for this, because this device works perfectly. This device works awesome. There is no flaw in this device, but there are much better devices in the market as compared to this device. So I'll recommend you to go for that too. All the links to all that 3 phones are in the description. The link for this phone is also in the description. Although this phone has a very good camera, but I don't think it has that much better camera. So I think you should go for other phones. This has a 13 megapixel rear camera, and the front camera is a 5 megapixel, which disappoints a lot. Trust me, it disappoints a lot. This camera is not that much good, so I'll recommend you to go for all that device. I'm saying it again and again because that's the true one. So that's it for today. If this would help you, don't forget to press that like button. And for more amazing videos, don't forget to subscribe to my channel. It's a host, Rohit Parody, signing off. And sorry if anyone has offended due to this unboxing, this parody kind of unboxing. So I'm really sorry for that. So well, it's a host, Rohit Parody. See you.